Hello and welcome. I am Sujit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. In this video, we will solve the remaining numericals of exercise 2D in polynomials chapter of class 9th math. I hope you will be able to solve these types of numerical. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. And 26th question is use factors theorem to prove that x plus a is a factor of x raised to the power n plus a raised to the power n for any odd positive integer n. सो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि x प्लस ए इसका फैक्टर है कि नहीं, वो उस केस में और जब जो n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर. सो 3, 5, 7, 9 इस टाइप से एनी पावर होनी चाहिए. Let px equal to x raised to power n plus a raised to power n where n is any odd positive integer. n एक any odd positive integer है, odd value है. So and also let g x equal to x plus a and x plus a is the factor of this. So gx equal to हम 0 कर देंगे, x plus a equal to 0 and x equal to minus a. So p minus a is equal to x replace with n. यदि x प्लस ए इसका फैक्टर है तो p माइनस ए की वैल्यू 0 आनी चाहिए, शुड बी 0. सो माइनस ए रेस्ट टू पावर n प्लस ए रेस्ट टू द पावर n एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू ए रेस्ट टू द पावर n प्लस ए raised to the power n and minus 1 raised to the power n into a raised to the power n plus a raised to the power n. So taking a raised to the power n common, so minus 1 raised to the power n plus 1 a raised to the power n and we know n or positive integer. So minus 1 raised to the power sub any odd positive integer is 3. 3 is odd numbers. So in this case minus 1 cube equal to minus 1 जब odd में powers होती है, then उस केस में नेगेटिव में आंसर आता है, नेगेटिव में वैल्यू हमें मिलती है. if पावर 7 होती है, नेगेटिव odd में 7, so minus 1. so और यदि यही वैल्यू पॉजिटिव में होती माइनस 1 रेज़ टू द पावर 12, देन उस केस में प्लस में आती. बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो n है वो एक ऑड नंबर है. सो इस केस में इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी एंड हियर प्लस 1 इंटू ए रेज़ टू द पावर n. सो दिस
equal to 0 into a raised to the power n and 0, and p minus a, and p minus a is equal to 0. So by factor theorem, x plus a is a factor of x raised to power n plus a raised to the power n when n is an और पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे p माइनस ए की वैल्यू 0 आ गई, so it is a factor. After watching this video, I am sure you will be able to solve these types of numerical easily. So stay tuned and best of luck.